अस्सलाम वालेकुम my dear viewers, कैसे हैं आप सब? Welcome to my channel Solutions for All. If you remember that in my previous video I told you like I'll be making a video on simple present passive. Well, finally I made a video on the topic like how can we convert active sentences into passive voice, but that is only about a simple present tense, because I'm not going to discuss about rest of all the tenses. So we will just talk about, and I'll just teach you like how can how can we convert active sentences into passive, but that's only related to simple present tense. Okay, so let's start without wasting our time. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे मज़े की बात ये है कि दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन Urdu, because I'm going to deliver this lecture in Urdu, because most of the people, they are requesting me again and again, like there are kids as well who are just watching my videos and they couldn't get that properly. So that's why I just think about like I should deliver this, I should teach you guys in Urdu in this video. जिस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले मैंने जो चार्ट इट्स गिवन ओवर देयर, like you can check its active voice pronouns and the passive voice pronouns. So at the very first I'm going to discuss about like how can we change pronouns as a subject which is given in a sentence. We can change them into passive voice. Okay, so this is what to understand, it's very important. You have to keep this in your mind. All the rules we are going to apply, we will have application of rules as well, as gradually in the video. So I'll discuss about and I'll teach you guys today, like, but it's all about only simple present tense. I told you already, so I'm again telling you. So this is what about like only simple present tense that I'll teach you. Okay, so you have to keep this in your mind. So whatever I'm telling you, whatever I'm just going to discuss regarding the rules regarding active and passive voice. Okay, so at the very first, दिस इज़ व्हाट लाइक जो सब्जेक्ट कोई भी अगर आपके सेंटेंस में है गिवन, ठीक है, जो भी आपका सेंटेंस है आपके पास इंग्लिश सेंटेंस है, उसमें आप देखते हैं सबसे पहले कि वो एज अ सब्जेक्ट जो हमारे पास चीज़ है, दैट इज़ व्हाट लाइक प्रोनाउन और एन नाउन, और कैन बी प्रॉपर नाउन, कैन बी कॉमन नाउन, और वट एवर इज़ इट ग्रामेटिकली. सो ग्रामर सेंस जो भी दे रहा है आपको, तो उसमें आपने इस चीज़ को फोकस में रखना है कि वो है क्या. अगर वो इनमें से कोई एक प्रोनाउन है जो मैंने कुछ स्पेसिफाई कर दिए, जो कि हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं, और हैं भी आई थिंक यही हैं सारे जो कि मेरे माइंड में आ रहे थे, मैंने मेंशन कर दिए. तो these are only the pronouns that mostly or commonly we use in all sentences or all kind of sentences. Like this is what like the chart gives you a sense, and it gives you an idea like how can we change active pronouns into passive sentence. Okay, if you are having active sentences and these are the pronouns, for example, I, we, he, she, they, you, it, and whatever else, if you are having other one, then you can consider these. Okay, so अगर आपके पास ये pronouns हैं तो आप active sentence में तो उनको passive में change कैसे करेंगे. So it's also given, you can see on your screen. So this is what like if you are having I in active sentence as a subject. All right, now how can you change that into passive voice? So you have to definitely, it's understood, you have to change I into me. Okay, so this is what like you'll get the concept gradually. Later on in the video I'll discuss it while applying the rules. Okay, so when we'll just try to apply the rules, there will be an application of rules, then you can get it easily. Okay, now let's start. This is what like if you are having I, we, they, so how can you change them into passive voice? So this is what it's all given on screen. You can please check it. You have to memorize all these pronouns. Now here are some of the examples like how can we change pronouns, some of the pronouns into passive voice. For example, if you're having these active sentences, for example, like he plays cricket. So how can we change into passive? So this is what like he as a subject, it is a pronoun in active sentence. This is an active sentence. Okay, if you remember the rule in part 2 which I have discussed in my previous video, it was about like how can we identify tenses.
सो इट वाज ऑल अबाउट लाइक एक्टिव सेंटेंसेस जो आपके पास होते हैं, आप एक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप मेरी उस वीडियो को पार्ट 2 को अगर गौर से देखेंगे उसको प्ले करके, तो उसमें ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी कि अगर आप एक्टिव सेंटेंसेस को, उसके टेंसेस को, मेन वर्ब और उसका ऑक्सिलरी वर्ब, यही एक कॉम्बिनेशन आपके पास होता है ग्रामेटिकली, जो कि आपकी हेल्प करते हैं कि हम लोग किस तरह से एक्टिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो भी टेंस है हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now these are the examples. So let's read, like these are two examples. Like he plays cricket, so the cricket is played by him. So this is what like you can focus over here, like how he changed into him. So this is what like as a pronoun he was used here, and now it's changed into him. And in a second sentence, second examples, it's given like we open the door, so it should be changed into passive and it will become like the door is opened by us. So please focus over here, like we is changed into us. Here are some of other examples, like he plays cricket and the cricket is played by him. And we open the door and the door is opened by us. So he drinks milk, so the milk is drunk by her, and it helps the police and the police is helped by it. So if you remember in the chart, it was given like how these pronouns will change into passive. Okay, so it won't change, it will remain as it is in the passive sentence, whether we are having an active sentence. All right, so you have to remember this. Okay, now then you also, same for the you won't change in the passive sentence. So you buy a candy is bought by you, and this, so working on a new project is started by them. I hope so you got about pronouns, like how can we change pronouns into passive. Now it's time for the rules. How can we apply rules for a conversion of active sentences into passive? It's very important, like how can we identify subject, verb, helping verb, objects in all over the tense from the sentences which are given. So this is very important. अगर आप इन चीज़ों को गौर से सुनेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी। उसके लिए सबसे पहले इससे पहले कि हम रूल्स को अप्लाई करें, बिफोर दैट आई थॉट अबाउट टू जस्ट गिव यू an idea, like how can we identify subject, helping verb, verb and object from a sentence. So this is the simple structure. It's a formation of a sentence. How can we formate a sentence? How can we structure of a sentence for a very simple sentence? So if you got it, if you understand, then you will be able to just make a simple sentence very easily. Okay, so this is what like एट द वेरी फर्स्ट इट्स अ सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर आपने सब्जेक्ट को देखना है कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। जैसे हमने प्रोनाउंस की एग्जांपल ली थी, अभी डिस्कस किया, और प्रोनाउन भी वही सारे एग्जांपल्स हैं, यानी एज अ सब्जेक्ट ही हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ओके, तो जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करें या जैसे भी आप यूज़ करते हैं उसको, बट वी मोस्टली स्टार्ट सेंटेंसेस with the pronouns with the subject. That can be, subject can be noun or it can also be a pronoun in a sentence. Okay, so remember, like we are talking about simple present tense. So this is what like simple present passive we are discussing about. So the structure is given on screen, so you can please check it and you have to memorize. Okay, so the structure will be very same, will be the same, like the subject will come in the beginning of sentence, and after, right after the subject, you will have to write helping verb if you have helping verb of any tense, you are going to write a sentence in that tense, then you can write. If there is no helping verb, then you have to just immediately you have to write verb right after the subject. Okay, so it doesn't mean कि अगर हेल्पिंग वर्ब उस टेंस में आता ही नहीं है और आप लोग वेट कर रहे हैं कि भाई, या सोच रहे हैं कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोच रहे हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो हमने इस टेंस में लगाना है या उस टेंस में लगाना है, दिस एंड दैट वॉट एवर यू आर हैविंग, सो उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको पता होना चाहिए
कि कौन कहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते और कहाँ पर यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। बेसिकली मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूँ, क्विक रिमाइंडर जल्दी से बता देती हूँ कि हम लोग यूज़ नहीं करते। एक हमारे पास अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, whether it is of simple present tense और simple past tense। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर जिसको आप प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, आप उसमें भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। डू और डज का यूज़ नहीं करते एज हेल्पिंग वर्ब, बट इफ़ यू आर हैविंग एज अ वर्ब डू और डज देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट। बट इसकी नेचर ऑफ ग्रामर चेंज हो जाती है ना, वो जो है एज अ वर्ब यूज़ नहीं होता, एज अ वर्ब यूज़ होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। इसी तरह से सिंपल पास्ट में भी अगर आप देखें तो हम वी टू यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस में, दिस इज़ फॉर ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत नहीं होती, वी कैन ओनली यूज़ देम इन नेगेटिव फॉर शोइंग नेगेशन इन अ सेंटेंस और फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप इंट्रोगेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर नेगेशन का यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, देन यू हैव टू यूज़ helping verbs. This is for simple present and simple past tense. Got it? Okay. Now let's go ahead. Here in this sentence, you need to identify at the very first, like which one is the subject. So of course, like it's highlighted and I just underline. She is as a subject. It's a doer in the sentence. It is also a pronoun in this sentence because it's not a noun, because I told you in the beginning of this video like what are the pronouns that we use in English for making sentences, and she, it's the one of them, like she. But the thing is, like, how can we change she as a pronoun into passive voice? If you remember, like I told you, she, like whatever we are having subject in any sentence, so that can be noun and that can also be pronoun, because subject can be both, it's according to the situation, so whatever situation we are having in the sentence. Now let's discuss about the helping verbs. So if you're talking about सिंपल प्रेजेंट पैसिव, तो सिंपल प्रेजेंट पैसिव में आपने ये माइंड में रखना है कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो देयर आर ओनली टू that we can use in simple present tense, that can be do and does. So any one of them we can use in simple present passive or not passive, this is for active. So if we are having simple present tense an active sentence and we are using active statement, so we will use do and does, but this is for the negative sentence and for interrogative sentences, but not for the affirmative or the positive sentences. I hope that you are having the concept of positive, affirmative, negative and interrogative sentences. But if you're not having any concept regarding these negative, what is the negation, what is interrogation and affirmative sentences, so please do comment so that I can tell you. तो अगर इतना नहीं है कोई कंसेप्ट आपको फिर भी, तो यू कैन, इट्स ओके, यू कैन जस्ट टेल मी, यू जस्ट कमेंट बिलो। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में एक सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको भी डिस्कस कर दूंगी। बट अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी पार्ट 2 जो है वो पैसिव वाली वीडियो, लास्ट वाली मेरी वीडियो अगर नहीं देखी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से हेल्प ले लीजिएगा, उसमें से देख लीजिएगा। और उसको उसमें तो मैंने हर टेंस का आगे व्हाट ऑक्सिलरी वर्ब्स वी यूज एंड विद द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आई हैड मेंशन एंड आई हैड टॉट यू गाइज लाइक हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द टेंसेस। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन लाइक कैसे हम लोग जो जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हम लोग किस तरह से डू डज वट एवर लाइक सिंपल प्रेजेंट पैसिव इफ यू आर हैविंग, or if you are talking about only simple present, so how can we use these auxiliary verbs? तो वो आपको माइंड में रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ क्यों इसी वीडियो में कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे, हम डू और डज का यूज़ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। whether we are inquiring something, whether we are asking any question, whether we want to know something or we want further details about something, then we have to use
these auxiliary verbs, these helping verbs, do, does in simple present tense. Whether we are having active state changing, if we are we're just about to convert into passive voice, then you have to change helping verb into another one. So what should be what it should be like, that we have to change into what helping verb, that I'll tell you later on in the same video. जैसे देखिए हमारे पास है she doesn't write poetry. So in this sentence you can focus like I have used what? I have used helping verb does over here. Why did I use it? Because we are having a negative sentence over here. So that's why I did use. So that's why I used it like she doesn't write poetry and she does not write poetry. So whatever you are writing, because this is the negative sentence, and the first one which I had discussed and we have written above, it is what, like it was she writes poetry. This is affirmative sentence, so that's why we didn't use do or does any one of them in the sentence in the first one. Okay, but the thing is like I added s with the first form of verb write, so it becomes writes. Okay, so she writes poetry. So this is what, because we didn't add do, does, and we have a singular subject, so that's why we are adding writes. We are adding s or es at the end of the verb. So whatever the first form of the verb we are having, so we have write, so that's why we are adding s at the end of the verb to make it writes. All right, so this is what, like another identification of simple present tense. Okay, if in affirmative sentences, if you are not using do and does, then instead of using these auxiliary verbs, what do? We have to add this is what, like about add up of s or es with the first form of verb, and this is what exactly what we have done here. Now let's discuss about the verb in the given sentence. She writes poetry. In the sentence, like what is the verb? Of course, writes. Writes is a verb in the sentence which is given. You can see on screen. So this is what, like as already I told you, I taught you and I gave you the concept of writes, concept of verb. So what can be the verb in a sentence? Okay, तो यहाँ पर आपके पास राइट्स एज अ वर्ब है, ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपके पास वर्ब है, एंड दिस इज एन एक्टिव स्टेटमेंट. This is an active sentence, not a passive sentence. Okay, got it. Now let's go ahead. It's about the object. So what is the object in a sentence? It is a poetry. Poetry is an object. Finally, it's time to apply the first rule of conversion of active voice into passive voice. So the first rule is what, like we have to switch subject and objects. Okay, so whatever the subject we already identified and we knew, like, and we just learn like how can we identify subject in a sentence and what can be the object. Okay, so in the given sentence we are having she as a subject and poetry is an object. So what we have to do at the very first, let's apply the rule 1. So you have to please memorize. अगर आपके माइंड में ये रूल रहेगा, अगर आप इस रूल को याद करेंगे या याद रखेंगे, तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के. अगर आप ये माइंड में नहीं रखेंगे इन चीज़ों को, तो आप लोग इनको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव स्टेटमेंट. सो दिस इज़ वॉट, लाइक यू हैव टू मेमोराइज. पहले रूल को अपने माइंड में रखें अभी से कि रूल 1 क्या है. आपने जस्ट यू हैव टू स्विच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. आपने इन दोनों को स्विच करना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पोइट्री एंड वी डोंट राइट्स एंड शी. ओके, राइट आफ्टर द पोइट्री. आप क्यों, अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मैंने इसको पी को ब्लैक कर दिया. वाई? Because P is, it becomes capital now because it is in the beginning of a sentence. So that's why it starts a sentence. That's why I just wrote in a capital capitalization. So this is what, like it starts a sentence. So मैंने इसको capital कर दिया.
सो दैट्स वाई, बट हम राइट्स और शी को एज इट इज़ नहीं लिखेंगे। अगर आपको याद हो, अभी स्टार्ट में बिगनिंग में मैंने आपको ये चार्ट डिस्प्ले किया था, और इस चार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रोनाउंस को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो सेम यहाँ पे सेंटेंस में हमारे पास क्या आया है, दिस इज़ वर्ड शी। अब शी को हमने हर में चेंज करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपने माइंड में एक चीज़ आप और रखें कि जब भी हमारे पास अगर हमने ऑब्जेक्ट अगर यूज़ करना है पैसिव स्टेटमेंट के लिए, आप ऑब्जेक्ट यूज़ करने जा रहे हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय का यूज़ भी करना है, ठीक है। दिस इज़ द वर्ड, दिस इज़ द क्लू। अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ यू मस्ट हैव टू यूज़ बाय। सो दिस इज़ द सेकेंड रूल। इफ़ यू आर चेंजिंग subject, if you're changing pronoun, if you're changing noun, so you must have to change. Of course you are going to write, you are going to add, object also in a passive statement, but before object you have to mention the word by. Okay, but by is not always necessary. Sometimes you have to use with, for, or other words as well. Okay, so this is what, like, I don't want to make it a complex, so if you want to know तो मैं फर्दर किसी आने वाली अपनी किसी भी वीडियो में आप लोगों को ये भी डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। तो अब हमारा जो है लेक्चर, इसको फर्दर इतना लेंथी नहीं करते, हम लोग जल्दी जल्दी से चीज़ों को कवर अप करते हैं, ठीक है। तो रूल 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल है चेंज वर्ब्स इनटू पास्ट पार्टिसिपल्स। और आपको इफ़ यू रिमेंबर कि जो पास्ट पार्टिसिपल है दैट इज़ व्हाट, लाइक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमने यूज़ करनी है इन ऑल पैसिव वॉइस स्टेटमेंट्स। जो भी आपके पास पैसिव स्टेटमेंट है या आप, तो आपको किस में मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है। आपने यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। Active statement में you can have first form of verb, you can have simple past, you can have past participle, you can have present participle. So any form of verb if you're using an active statement. But remember, I repeat, you have to remember, like in passive statements you are using only third form of verb. चाहे कोई भी आपके पास एक्टिव में है फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन पैसिव में जब आप उसको चेंज करेंगे तो आप उसको आपने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है सिंपली, ठीक है। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट वर्ब रूल फर्स्ट वाला आपका जो रूल था वो अप्लाई हमने कर दिया, सेकेंड वाला हमने कर दिया, ठीक है, बाय का यूज़ ऑफ बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हम लोगों ने थर्ड रूल जो हमारा है only about the verb, like how can what form of verb we have to change into passive voice. Or of course what I told you already, like this is what, if you are having whatever helping verb whatever form of verb we are using in the active statement, so this is what we have to change into passive. If you are changing while converting the sentences from passive, so we have to use only third form of verb. तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हमने पैसिव में यूज़ करना है, ठीक है, वट एवर वी आर हैविंग इन एक्टिव स्टेटमेंट। तो अगर हम इसको अभी अप्लाई करते हैं तो व्हाट इट शुड बी लाइक, ओनली दिस इज लेफ्ट, लाइक पोइट्री डैश बाय हर। सो व्हाट इट शुड बी, ये अभी तक स्टिल इट इज लेफ्ट, सो व्हाट हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज, एंड व्हाट अबाउट the verb, main verb we have to use. So this is what, like, third form of verb, as I told you already, so we are going to use, okay, in the passive statement. So writes will become written, because written is a past participle, this is the third form of verb, so that's why we have to use a written. So poetry dash written by her, so this is the passive statement. What we had a sentence, she writes poetry, but still समथिंग इज लेफ्ट, स्टिल हेल्पिंग वर्ब इज लेफ्ट। अब हेल्पिंग वर्ब हमने कौन से यूज़ करना है, इज एम आर, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दीज आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स दैट वी यूज़ फॉर ओनली सिंपल प्रेजेंट पैसिव। तो अगर आपको याद हो कि हमने सिंपल प्रेजेंट पैसिव का ये डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर सिंपल प्रेजेंट पैसिव है तो उसके लिए हम लोगों ने इन तीनों में से किसी एक को यूज़ करना है। वी आर नॉट सपोज टू यूज़ ऑल देम टुगेदर। आप कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जिनको कंसेप्ट नहीं होता ग्रामर का इतना, तो वो इस एम आर को स्टार्ट में इसको यूज़ कर रहे हैं, मिड में एम को यूज़ कर रहे हैं, बट इट्स इनकरेक्ट, टोटली इनकरेक्ट, इट्स रॉन्ग। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, इन प्रैक्टिस को मत करें, ठीक है। सो यू हैव टू यूज़ एनी वन ऑफ देम, इज़,
or am, any one of them. Which one is most appropriate, you can use it. So which one is the most appropriate helping verb over here with the subject poetry? Because आपको पता है कि subject और subject object को हमने दोनों को भी switch them, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, हम दोनों ने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे पहले हमारे पास शी था, लेकिन अब शी हर बन गया, और एंड नाउ वी आर हैविंग पोइट्री एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास पोइट्री था अब वो सब्जेक्ट हो गया, एज अ सब्जेक्ट हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट अबाउट पोइट्री? पोइट्री के साथ हम इज़ एम आर में से कौन सा यूज़ करेंगे? सो दिस इज़ व्हाट लाइक is, and definitely we are going to use is with the subject poetry now. Okay, so poetry is written by her. अब देखिए, जैसे poetry is written by her, we are done with the sentence, we are done with the conversion of active statement into passive statement regarding simple present passive only. Okay, that is what we had discussed in this video. I just tried my level best to just teach you guys or to give you the concept of active and passive voice. How can we change simple present active sentences into simple present passive statements? Okay, it's all about like we had a sentence of active statement, like she writes poetry, so how could we able to change into passive? So this is what like it becomes now, poetry is written by her. So this is the passive statement. Finally we are done with this, and now some of the examples, but before this I would discuss about it should be a recap of the rules what we are having. Only 3 rules were there that I had discussed and I had taught you, and I tried my level best to give you the concept of how can we apply rule 1, rule 2 and rule 3. If you still didn't get anything regarding, or if you're having any ambiguity regarding these concepts, so you can please do comment and you can tell me जो भी आपकी confusion है। आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट किसी भी आने वाली वीडियो में उसको ज़रूर डिस्कस करूँ, और उस पर भी कोई ना कोई हम लोग इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स बनाएंगे, न्यू टॉपिक्स को भी लेंगे हम लोग। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने अब आने वाली, ये तो मेरी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट पैसिव की थी, और फर्दर जो मेरी होंगी वो सिंपल पास्ट पैसिव। नेक्स्ट मेरी पार्ट 4 जो है इट्स कमिंग सून, सो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद अस। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, जितने भी वीडियोज़ हैं ट्राई किया करें, उसको टाइम निकाल के कभी देख लिया करें। एंड आई एम वेरी ऑनर and I'm very thankful for all my subscribers, and for all the people, for all the viewers who kept watching my videos. इतने बिजी शेड्यूल में से अगर आप लोग टाइम निकाल के मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस, and thank you so much. Keep watching. I would request again at the end of my video. Well, here are some of the examples, but you can please go through all these examples which I have mentioned, or 4 only examples. For example, like she prepares breakfast, so what it should be like in passive, the breakfast is prepared by her. And we buy books, so what it can be in passive, books are bought by us. Doesn't complete the homework, so the homework isn't completed by Ali. And he eats bananas, bananas are eaten by him. कमेंट जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएं कि जो 5th वन है, लाइक दे लीव द अपार्टमेंट, व्हाट इट शुड एंड शुड बी इन द पास्ट सिंपल प्रेजेंट पैसिव। सो अगर आपको पता है, अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है, तो जल्दी से इसको कन्वर्ट करें पैसिव में एंड देन टेल मी। ओके, सो इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, जितने भी वीडियोज़ हैं ट्राई किया करें, उसको टाइम निकाल के कभी देख लिया करें। एंड आई एम वेरी ऑनर एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स, एंड फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द व्यूअर्स हु केप्ट वॉचिंग माई वीडियोज़। इतने बिजी शेड्यूल में से अगर आप लोग टाइम निकाल के मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस, and thank you so much. Keep watching. I would request again at the end of my video, if you are having any question you can please just do comment. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन करें। आपने जो भी बताना ज़रूर है कि मैंने वीडियो कैसी बनाई, मेरा लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को,
और अपनी तरफ से मैंने जो पूरी ट्राई की कि मैं अपना आप लोगों को जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ वो आप लोगों को कंप्लीट उसकी फुल समझ आ जाए। बस जो भी मैं आपको कंसेप्ट देना चाह रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ जाए एंड आई होप सो कि आप लोगों को डेफिनेटली कंप्लीट अगर पूरे लेक्चर की समझ नहीं भी आई ना, अगर 5 मिनट का लेक्चर भी उसमें से आई है, इट मीन्स लाइक आई एम सक्सेसफुल। सो लेट्स वाइंड अप नाउ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।